Researchers at Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur, have developed an indigenous ventilator using local technologies. It is a major boost to India's fight against the deadly coronavirus. In a press conference, the institute's director, Hari Shirani, explained the details about the ventilator. है अभी पहला सिस्टम है और हम चाहते हैं इसमें और रिसर्च करते रहें कंटिन्यूसली और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाए। और अगर उस समय पहुंच गए जो शायद 2-3 महीना लगेगा हमें उस लेवल पे, तो फिर उस हिसाब से कह सकते हैं हम सेल्फ सफिशिएंट है, शायद इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो बनाया है हमने ये मैकशिफ्ट जो हॉस्पिटल है जगह जगह बिस्तर लगाए जा रहे हैं और वहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है, उसके लिए बहुत सूटेबल है। यहाँ जैसे ट्रैवल कर रहे हैं बहुत सूटेबल है उसके लिए, या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये लगाए। पर आप कह रहे हैं कि सस्टेनेबल होना चाहिए बहुत लंबे टाइम के लिए, तो शायद मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको, बोलूँगा उसके साथ फिर टेक्निकल स्टाफ होना ज़रूरी है जो मेंटेन करते हैं। इसमें सारा इंटेलिजेंस नहीं डाला गया है, सारा डॉक्टर वाला नॉलेज नहीं डाला गया है, बट फ्यूचर में जो 2-3 महीने में अगर हम सारा वो नॉलेज डालेंगे, हम बोलेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे शायद कोई भी हमें इस वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिया में सब कुछ ढंग से बना सकते हैं। Something which is to be provided to the common people. So that is how the thing started. So we went on doing things, and our critical care team, Dr. Arindam, Dr. Ramprasad and Dr. Rose used to do that. Again we went in for a second monitoring because this has many unique features which is not there in the normal contemporary ventilator. That made the cost low as well as the effectivity high. As well as the separate parts can be manufactured by separate industries, so the industry corridor has become very broad-based. To make in India with a broad-based industrial corridor, a completely new concept and a very rugged and concept to be used at a much lower price. The oxygen, when even through normal oxygen flow, the oxygen does not reach the blood. Ventilator does not have any other function. You cannot keep a person on ventilator alive if the person is dead. The person will explode. Okay, so the ventilator can only be kept on an alive person. And the purpose is when you give a high flow oxygen also, and the oxygen is not going into the blood because the lung walls have become very thick, then you need pressurized oxygen to go into the lung.